everyone and very good afternoon. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma. I hope I'm clearly audible and visible to everyone watching me live. So we are back with yet another session on RCs. We've had a couple of sessions, rather more. We've had 3 sessions already on different genres. We've discussed many topics. और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम आरसी डिस्कस करने वाले, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑफ क्लैट. अगर आप क्लैट की हिस्ट्री देखोगे, फिक्शन पे, शॉर्ट स्टोरीज पे बहुत सारे पैसेजेस आए हैं पास्ट में और आ भी सकते हैं. अगर आपने देखा होगा शर्लॉक होम्स से बहुत प्यारे कंसोर्शियम को शर्लॉक होम्स से बहुत सारे पैसेजेस आए हैं कई बार. उसी तरीके का एक पैसेज आज लेके आई हूँ डिटेक्टिव बेस्ड थीम स्टोरी पे. सर, एजेंडा क्या है सेशन का ये डिस्कस करते हैं और फिर पैसेज देखेंगे आज क्या करने वाले हैं. तो एजेंडा आज का ये है और इस सीरीज का ये है कि हम अभी जो सीरीज कर रहे हैं उसका नाम है आरसी मास्टर सीरीज. In the series, I bring to you RCs. Every time I see you, I bring to you RCs from different topics, different areas, so that you know किन पे passages आ सकते हैं. That's the first agenda of the series. और फिर हम passages solve करते हैं और उसके थ्रू हम दो चीजें देखते हैं. एक, वो RC solve कैसे करना चाहिए था ये मास्टर करते हैं, और दूसरा, उस टॉपिक पे बेस्ड कैसे पैसेजेस आएंगे और उनको कैसे पढ़ना है, उनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये चीजें डिस्कस करेंगे. तो ये है एजेंडा हमारी इस सीरीज का, आरसी मास्टर सीरीज का. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन जिसपे आज हम फिक्शन पे आरसी करने वाले हैं. एजेंडा होगा, वी अंडरस्टैंड कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स एंड देन वी डिस्कस one RC on that specific topic that we have today. और आगे बढ़ने से पहले we have our free workshop that's happening on 29th of January 7 p.m. Abhimanyu sir is going to take the seminar on how to get an NLU call in CLAT 2024. Make sure you attend this workshop, but for that you need to register yourself. The details of the workshop will be there under my video in the description box. You can follow the link and register yourself for this workshop. Do not miss out on that if you are somebody who's targeting CLAT 2024. Okay. आगे बढ़ते हैं and we have our CLAT 2024 comprehensive course as well that we've launched. You can call our counselors on this specific number to know more about the program that we're offering to you. It's your ticket to your dream college, dream NLU. तो call our counselors. Alternatively, आप ऐप डाउनलोड करके भी कॉल कर सकते हो काउंसलर्स को पता करने के लिए कि क्या है प्रोग्राम्स में हमारे पास. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब बिफोर आई शो यू दी एक्सट्रैक्ट, पहले डिस्कस करते हैं फिक्शन बेस्ड पैसेजेस आएंगे तो आता क्या उनमें. यूजुअली फिक्शन बेस्ड पैसेजेस, लेट मी राइट दैट हियर. ओके, यूजुअली फिक्शन बेस्ड पैसेजेस एक इमेजिनेटिव स्टोरी पे होते हैं, नॉट रियल बट इमेजिनेटिव वन. ओके, और फिक्शन बेस्ड पैसेजेस यूजुअली एक स्टोरी के फॉर्मेट में होते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी जिसको आप उस पैसेज में ही पढ़ के एक मीनिंग निकाल सकते हो. तो यूजुअली जैसे आपने स्कूल में आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में स्टोरीज होती थी, वैसे ही स्टोरीज, हाय कृष्णा, वैसे ही स्टोरीज आपको इन फिक्शन बेस्ड पैसेजेस में मिलेगी. इनके क्वेश्चन फैक्चुअल भी हो सकते हैं, इन्फरेंशियल भी हो सकते हैं, मेन आइडिया बेस्ड भी हो सकते हैं. इफ यू लुक एट द लास्ट फ्यू इयर्स, अगर आप लास्ट कुछ साल के पेपर के पैटर्न के एनालिसिस करोगे, आपको पता लगेगा फिक्शन बेस्ड पैसेजेस वर प्लेंटी. लास्ट ईयर भी थे, उससे पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे. 2020 से लेके 2023 तक के पेपर में हमें हर साल फिक्शन बेस्ड पैसेजेस दिखे हैं, एटलीस्ट वन. शर्लॉक जैसे पैसेजेस से बहुत प्यार है कंसोर्शियम को, शर्लॉक जैसे पैसेजेस मल्टीपल टाइम्स आए थे. उसके अलावा और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आई थी. तो उसी की तरह एक शॉर्ट स्टोरी आज मेरे पास आज के एजेंडा, आज के सेशन में है. और ये जो स्टोरी है, इट्स स्प्रेड ओवर 3 पेजेस. तो इस स्टोरी को पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना है. इन क्वेश्चंस में आपके पास फिगर ऑफ स्पीच टाइप क्वेश्चंस भी हैं, कंटेक्चुअल वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चंस भी हैं, जो कि दे वर प्लेंटी कंटेक्चुअल वोकैबुलरी अगर आप लास्ट फ्यू इयर्स के पेपर को देखेंगे तो पेज नंबर 1 मैं आपको दिखाती हूँ. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. पढ़ो उसको और याद रखना, आपके लिए उसकी स्टोरी माइंड में बनाना बहुत जरूरी, नहीं तो आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे वो कहानी क्या हो रही है. पेज नंबर 1 पढ़ो and send me a done once you're done reading the page. Here you go. All the best, everyone.
Hi Palak, please read the page and send me a done once you're reading it. Oh, yes, Palak, we have a series going on our app as well, on MHCET, as well as our YouTube channel. ऐप में नहीं देखा अभी तक तो देख लेना सीरीज चल रही है बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं ऐप में एमएचसीटी के लिए यूट्यूब चैनल पे भी So Bhuvi has already read the page. Everyone else quickly read the page and send me a done. Yes, Palak, free classes. I'm referring to free classes. Page number 2, everyone. Okay, Kashish. ठीक है, noted. Krishna is done. Bhuvi is done. I hope Palak and Krishna, you're done too. Let's go to the next page. Page number 3 and the last page. I hope you found the trick in the story.
Send me done once you're done, guys. Just a minute. Yeah. Done? Okay. Here we go. ओके, तो अभी तक आपने पैसेज में क्या समझा? लेट्स लुक एट दैट। पैसेज में एक इट इज दिस वुमन, ठीक है, जो कि अपनी टेस्टिमनी देने आए हैं मिस्टर एडम के अगेंस्ट, ठीक है। उनको लगता है कि मिस्टर एडम एक मर्डरर है। अब उनकी टेस्टिमनी में एक काउंटर क्वेश्चन आता है उनके पास में, और मिसेस सैलमन जो टेस्टिमनी देने आई हैं वो लास्ट में कंफ्यूज हो जाती हैं। डिड यू अंडरस्टैंड वो लास्ट में क्यों कंफ्यूज हुई? व्हाई वाज शी कंफ्यूज्ड? व्हाई कुड शी नॉट बी श्योर if Mr. Adams was the murderer or not? I hope you've understood that. Kashish, are you watching me live? I can make some suggestions to you कि एक fiction based passage को कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, fiction based passage हमेशा एक कहानी लेके आएगा, ठीक है, और उस कहानी को आपको हमेशा माइंड में एक पिक्चर बनाना जरूरी होता है। That is, while you start reading from the first page, you can think it, the moment it says 2 in the morning, you have to imagine the kind of environment it has. It's dark, it's quiet, okay? She is unable to sleep. You have to imagine her, Mrs. Salmon, okay? When he says there was, she went to the window and saw Mr. Adams on the steps of Mr. Parker's house. You have to imagine Mr. Adams standing at the steps of Mr. Parker's house. So when you have a story, it's always the best to make a picture in your head so that while you're solving questions, you're able to recollect कि कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी। हमेशा उस कहानी का एक पिक्चर बनाया करो अपने माइंड में, ठीक है? आपके लिए रिकलेक्शन बहुत इजी होगा। कहानी आगे चलती है, कॉन्वर्सेशन पूरा है, कोर्ट में क्या कॉन्वर्सेशन जा रहा है? मिस्टर सैलमन सेज यस, आई एम एब्सोल्युटली श्योर दिस वाज द मैन, आई सॉ हिम, ओके। एंड देन एक काउंटर क्वेश्चन आता है जब वो एक ट्विन ब्रदर को देखती है एंड शी इज कंफ्यूज्ड कि ये मर्डर मिस्टर एडम्स था या उनका ट्विन ब्रदर था। शी ऑफ कोर्स कुड नॉट बी श्योर। कहानी आगे चलती, बट हमारे लिए इतनी कहानी बहुत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, the author has called the trial strangest murder trial that he ever attended. Strangest murder trial that he ever attended. A woman was battered to death. इसने इस क्वेश्चन में मैम एग्जैक्टली देवांशी you're right. मैम टाइम टेबल एंड टाइमिंग्स ऑफ माय क्लास। कशिश, मेरी क्लासेस देखो, ये क्लास होनी चाहिए थी शाम को 7 बजे, बट क्योंकि 7 बजे मेरी एक क्लास कहीं और लग गई तो टाइमिंग इसलिए चेंज हो गया है। टाइमिंग यूजुअली आई टेक 2 to 3 classes per week here and 2 to 3 classes per week on our app as well. बट टाइमिंग एंड टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे जाके कि कब कब क्लासेस शेड्यूल्ड है, ठीक है। फॉलो करने पे आपको पता लगेगा, वो अपने आप शेड्यूल होती रहती है। चलिए आगे चलते हैं। Answer this question. Why did the author call this trial the strangest murder trial he had ever attended? What's your answer? क्या आंसर है आप लोगों का, बताइए। A, B, C, because the accused was a very strange personality, or because despite having potential witness, that was the woman, 56-year-old woman, and evidence against the accused, his wrong could not be proved, or
C, Bhuvi says C, or is it none of these? Devanshi says B. चलिए एक बार देखते हैं. C says because Mrs. Salmon's evidence could not be proved before the court. स्ट्रेंजेस्ट ये इसलिए नहीं था कि मिसेस सैलमन का एविडेंस प्रूव नहीं किया जा सकता था. स्ट्रेंजेस्ट ये इसलिए था कि विटनेस है आपके पास, आई विटनेस है आपके पास, अक्यूज है आपके पास, लेकिन आप इस अक्यूज को क्लियरली गिल्टी नहीं बोल सकते. क्योंकि अगर आपके पास आई विटनेस है, क्लियर गिल्टी बताना बहुत आसान है क्योंकि विटनेस ने आपको देखा है. बट क्योंकि इस अक्यूज का एक ट्विन ब्रदर था जो कि बहुत अनयूजुअल सिचुएशंस में होता है, that made the trial the strangest murder trial he had ever witnessed. So Krishna and Bhuvi, it's not because एविडेंस को प्रूव नहीं किया जा सकता था. एविडेंस कुड बी प्रूवन, बट वो एविडेंस को प्रूव करने के बाद उन दोनों भाइयों में से कल्प्रिट कौन था वो नहीं प्रूव किया जा सकता था. बी इज अ करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है इस लाइन में. हियर हिज आईज suffused with horrifying and brutal fear like an animal's when you raise a whip. इस लाइन में आपको figure of speech बताना है. What do you think the figure of speech here is? Personification, simile, onomatopoeia, or none of the above? Answer बताइए. Figure of speech B, simile. Who says B? Others? Okay. अगर आपको figure of speech नहीं आते हैं, I would highly recommend you do them because there have been questions in the last few years, a lot of them on figure of speech, and they can always come back again. Okay, so personification is used when you give a human characteristic to a non-human thing. Giving a human characteristic to an animal, giving a human characteristic to a non-living thing is personification. यहाँ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, इट कैन नॉट बी पर्सोनिफिकेशन. Onomatopoeia are words that represent their sounds, like clap, thud, boom. These are words that represent their sounds. We haven't used any of those words. This is not onomatopoeia. Rather, it's a simile. Simile is when you draw comparison using the words like, so, or as. Comparison between his eyes compared to an animal's. Okay, so there's a similarity drawn in this situation to this situation using the word like, so, and as. When you use the word like, so, and as, yes, exactly. Atikul, you're right. That is what simile is. Correct answer is a B. Question number 3 देखते हैं. The expression pecking his eyes used in the passage refers to which of the following? Shall I take you back to the passage? ये कहाँ eyes used है? एक बार लाइन पढ़ लो, फिर शायद आपको आंसर मिल जाएगा. ये रहा. Okay, so I'll take you back to the question. She looked straight at the big man in the dock who stared hard at her with his pecking gaze eyes without emotion. अगर आपको पता है इस वर्ड का क्या मतलब है, आपको आंसर भी पता होगा. बताइए. Is it bulging eyes, red eyes, small eyes, or none of them? ये none of them बड़ा lazy examiner था हमारा.
Answer. None of them. सिर्फ Hingiz is a kind of dog. उस dog के बहुत बड़े बड़े eyes होती है, bulging eyes होती हैं, ऐसे बाहर निकल रही हैं. वैसे ही eyes मिस्टर एडम्स की थी. The correct answer is A. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. Why was Mrs. Salmon convinced that the man she saw had committed the crime? अच्छा, मुझे पता है आप बहुत सारे आंसर्स मार्क करेंगे. एक बार क्वेश्चन ढंग से समझो. If you understand the question carefully, you will be able to mark the correct answer. इसी मैन ने क्राइम किया था, किसी और ने नहीं किया था. Why? How was Mrs. Salmon so sure कि इसी मैन ने क्राइम किया था? Nobody else is the meaning of that. Is if Mr. Adams was the culprit and nobody else, how was Mrs. Salmon so sure? Answer this question. Guess Devanshi. Mrs. Salmon was so sure about Mr. Adams only because she had seen him clearly in the street light. There was a line here. How can you be so sure? Because she says it was moonlight and there was lamplight in his face. I can remember his face because even if it was 2 o'clock, there was lamplight on his face. The street light could show who this person was. So because she had clearly seen him, yes, that's D. And the last question, everyone. Who was murdered in the scene? Mrs. Wheeler, Mrs. Parker, Mrs. Salmon. याद करके बताओ. Who was murdered according to you? मिसेस पार्कर के डोर पे देखा था मिस्टर एडम्स को. मिसेस पार्कर के स्टेप्स पे देखा था मिस्टर एडम्स को. डज दैट मीन मिसेस पार्कर वाज मर्डर्ड? नो, नो. मिसेस पार्कर के घर के बाहर देखा उनको. हो सकता है मिसेस पार्कर के हस्बैंड का मर्डर हो गया हो सकता है मिसेस पार्कर के सर्वेंट का मर्डर हो गया हो सकता है मिसेस पार्कर के डॉग का मर्डर हो गया हो. We cannot infer that. So Mr. Adams was seen at the door of Mrs. Parker, on the steps of Mrs. Parker's home. But we don't know if she was the one being murdered. The correct answer is it cannot be inferred. D. So I hope you've understood how you're supposed to approach a passage if it's fiction based. सबसे आसान होता है पिक्चराइज करना, अपने दिमाग में एक इमेज बनाना, so that you're able to recollect the information while you're solving the passage. आपके लिए वो रिटेंशन बहुत जरूरी है. रिटेन नहीं कर पाओगे तो बार बार पैसेज में जाओगे रिकन्फर्म करने के लिए आंसर और फिर टाइम वेस्ट करोगे अपना. On that note, we have launched our CLAT 2024 comprehensive course. This is the number of our counselors. If you wish to study from us, you need to call our counselors on this number and they'll let you know more about the programs. The details of the program are also there under my video in the description box. And Anika Sehgal, all into rank 18. She was one of our all 1 year online classroom student. Many congratulations, Anika. We're really, really proud of you. Make sure you follow us. अच्छा, डोंट लीव द क्लास विदाउट हिटिंग द लाइक बटन, है ना. ये लाइक करना है सेशन को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में फॉलो करना है और ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले से. मेक श्योर यू डन दैट
I shall see you all again very, very soon. Thank you so much, everyone. Have a very good long weekend. Happy Republic Day, everyone. God bless all of you.